Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I will be supplementing the news with some additional information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So this is the topic for 21st of January. The first topic is India Innovation Index Report 2020, which has been recently released by the Niti Aayog. The second important topic is that Supreme Court has dismisses Aadhaar review petitions. The third important topic, Center Nod for Chenab Hydel project. The second last important topic is true empowerment for the electricity consumer. And the last topic is Supreme Court uphold the IBC section 32A. So these are some of the important article and editorial reported in the newspaper. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this session and the explanation of yesterday question. So let's get started with the first news. That is India Innovation Index Report 2020. The news has been reported in the Indian Express and the index has been released by the Niti Aayog. So talking about this type of news, this is a very factual news which is very important for your prelims examination. Anything can be asked from there. And again, you can use a fodder point from this in your General Studies paper 2 as well as General Studies paper 3. So the Niti Aayog has recently released the India Innovation Report. This is for 2020. And the report was initiated in 2019 in the lines of Global इनोवेशन इंडेक्स. जिस तरह की GII की इंडेक्स रिलीज की जाती है वर्ल्ड वाइड एनुअली कंट्रीज को रेट की जाती है, उसी सेम पैरामीटर्स पे इंडिया ने 2019 से ही इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट देना शुरू किया है. दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय द नीति आयोग. नाउ इन 2015 इंडिया रैंक 81 अमंग 141 कंट्रीज इन द GII, जो हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 81 थी. Now by 2022, India has ranked 41. So you can see the improvement of India in terms of the Global Innovation Index among 131 countries. Now क्या क्या indicators हैं, खास करके अगर बात करें इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट्स की, तो सर्वे में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है. So first is level and quality of education, especially in research. Second, number of student, जो PhD student कितने लोग enrolled हैं वो. Enrollment in the engineering and technology, number of high skilled professionals, investment in research and developments, FDI की inflow कैसी है उस particular states में, internet subscribers कितने हैं, basically knowledge intensive employment, number of patents and trademark application filed, और business environment कैसा है particular states का, and safety and legal environment among others. So these are some of the important indicators that are taken into the survey to rank the states. Now talking about the categories of the state, इस बार की जो रिपोर्ट आई है इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट जो है उसमें खास करके स्टेट को कैटेगरीज बांटा गया है. सो देयर आर 3 कैटेगरीज among which the state has been divided. The first include the major state, second include the union territories, and third include the hill and northeastern states. तो बात करें अगर मेजर स्टेट की कैटेगरीज में, सो कर्नाटका इज द स्टेट दैट हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिंग अमंग द मेजर स्टेट बाय द नीति आयोग, right? So this has been ranked 1. I will show you a graph, a table where I have given a ranking of all the states. Now talking about the Karnataka topped the score by 42.5% from the second year. ये कंटिन्यूड है जहाँ पे कर्नाटका ने दूसरी बारी अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा है. And the success has been attributed by the high number of venture capital. As we know, Karnataka, especially Bangalore, is a city which has a lot of IT hub, right? So innovations की बात अगर की जाए, तो Karnataka has definitely performed very well. So registered with the GIC, ITC exports and high FDI flow in the city. Now the second most important city that has been ranked as the second is Maharashtra, followed with a score of 38, and Bihar finishes the last rank with 14.5. ना अगर बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, तो 4 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला. दे ऑक्युपाइड द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स फ्रॉम द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र को अगर हटा दिया जाए बिकॉज दिस द पार्ट ऑफ मोर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया. सो मैं अगर साउदर्न स्टेट्स की बात करूँ तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ द स्टेट्स. Now talking about the union territories, so union territories में Delhi is the union territories that has topped in this ranking.
Delhi has recorded the highest number of trademark and patent applications, along with the establishment of new startup and companies in the last financial years. और अगर स्कोर की बात करें तो दिल्ली हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स इन द कंट्री विद 46.6%, while Lakshadweep has the lowest score is 11.7. So these type of question are very important, factual in nature, but very relevant for the prelims examination. Now talking about the northeastern states, so among the northeast, hilly states like Himachal Pradesh has the highest score of 25, and the lowest ranking is for the Meghalaya. So you can see here, this is the state ranking. This is directly from the index report, India Innovation Report 2020. You can see Karnataka ranking 42.50, and among all, Delhi has ranked the highest in union categories. The UT में Delhi की 46.60 है, और ओवरऑल अगर जितने भी स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो दिल्ली का है. सो मेक श्योर यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ओवरऑल दिल्ली हैज द हाईएस्ट नंबर. यूटी में दिल्ली की 46.60 नंबर हाईएस्ट है. कर्नाटका अमंग द स्टेट 42.50, एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश इज 25.06, and the lowest is Meghalaya, that is 12.5. And among UT and cities, Lakshadweep is 11.71, and among the major states, Bihar is the lowest, that is 14.48. So you can take the screenshot of it as well, because this can help you in any other examination apart from civil services. Now, what is the framework of this index? तो framework की बात की जाए तो the framework of the index include the global considered parameter for measuring the innovations, such as percentage of GDP spent on the research and development. कितनी GDP की spending research and development में की जाती है, while keeping them specific to the Indian economy. और अगर बात करें, India also spent 0.7% of its GDP on the research and development, much lower than the top spenders such as Israel. इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो अपने कंट्री में इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 4.95%, क्लोज टू 5% तक इन्वेस्ट करती है, एंड इंडिया इज द कंट्री विच हैज अ स्पेंडिंग ऑफ 0.7%, राइट. सो दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द इंडिकेटर. सो इंडिकेटर इज मोर रेलिवेंट. Coming to the second news, that is Supreme Court has dismisses the Aadhaar review petitions. The news has been reported in the Hindu. And talking about this type of the news, this is again very significant for your general studies paper 3, and an analytical question on the mains can be very possible asked. And talking about the part on the prelims examination, review petitions and other part which is there in the article, this power of the Supreme Court can be asked in the prelim part. So the Supreme Court, in majority's view, have dismissed a series of petition that seeks the review of its 2018 judgment that uphold the Lok Sabha Speaker's certification of the Aadhaar laws as money bill, and subsequently passes in the Parliament. So this is what the Supreme Court has to say, but I will tell you precisely what exactly the review is all about. So review दो important questions पे की गई है. So the first, the questions that were there by the 5 judges. So the 5 judges bench was there for the Aadhaar judgment in 2018. The first सबसे पहली क्वेश्चन रखी गई कि whether the speaker decision to declare a proposed law as a money bill was final and cannot be challenged in a court. So this was the first question. For that, the judgment has come. The majority of the judgment says in 2018 that the speaker decision could not be challenged in a court, only under the circumstances, right? So this is what the judgment has to say. Now the second question that is lying is whether the Aadhaar, that is targeted delivery of financial and other subsidies, benefit and services act 2016, was correctly certified as a money bill under article 110 or subsection A of the constitution. So the recent judgment said that the judgment concluded that Aadhaar was rightly called as a money bill. So this is what the 5 bench judges has recently upheld this judgment of 2018. Now coming to the third news, that is center nod for the Chenab Hydel project. So Chenab Hydel project, a factual question, very much relevant for your prelims examination, and those of you who are having geography as an optional in UPSC, so for them this is also very important. And other than general studies, this can be helping in your general studies paper 3, and also paper 1 where geography is a section. So the union government has recently approved the going ahead with the long pending 850 megawatt Ratle hydroelectricity power project on the Chenab river. This is in the Jammu and Kashmir.
और बात करें अगर गवर्नमेंट की, तो इन्होंने जो अप्रूवल दी है फॉर द चेनाब हाइडल प्रोजेक्ट, दैट कॉस्ट अराउंड 5,822 crore. So this is a costly project that is coming up in India, basically in Jammu and Kashmir. Now, in August 2017, the World Bank has allowed that India could construct the dam. So the approval was also, the grant was also there from the World Bank itself. So World Bank as a concept is important. They can ask you who has given the approval or who is getting from where the India is getting support for these projects. Now, this is a joint venture product. टॉकिंग अबाउट द जॉइंट वेंचर एंड एमओयू, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, ये साइन किया गया था NHPC लिमिटेड बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज JKPDD एंड JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट. तो ये जो 850 मेगावाट की रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो जॉइंट वेंचर्स होगी, मैंने आपको बता दिया NHPC और JKSPDC के बीच में होगी. वहाँ पे 51% जो इक्विटी है वो NHPC के पास होगा एंड 49% वुड बी विद JKSPDC, राइट. सो रेस्पेक्टिवली दे वुड टू हैव कंप्लीट इन द कमिंग 5 years. Now, talking about the location of this project, where it is exactly being built, because many a times in examination they can ask you the location. So this is built again the Darbshala village in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir region. और बेसिकली अब ये नए यूनियन टेरिटरी जो यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो दिस इज इन द जम्मू एंड कश्मीर. डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. नाउ क्लेमिंग दैट इट इज नॉट कन्फर्मिटी विद द इंडस वाटर ट्रीटी, और पाकिस्तान ने इसको प्रोटेस्ट करते हुए कहा है, पाकिस्तान हैज रेज्ड अ क्लेम दैट they have concerned that this is something which is not in line with the Indus water treaty. तो जो पाकिस्तान के क्या concern है, that I will also tell you what are the objections that is coming from the Pakistan. So Pakistan government has said they have objected the construction of this dam and they said that जो Indus water treaty है, उसके against है ये, and Pakistan has approached World Bank with the fresh protest, but the center has now decided to go ahead with the construction because government of India has already get a green nod from the World Bank and they would be soon commencing the project because this is a huge project costing around 6,000 crore rupees approximately. Now, what are the benefits of the project? So, as per the Lieutenant General of the Jammu and Kashmir, so the project is going to generate a direct and indirect job of 4,000 people and additional job of 2,000 would be created. And the commissioning of a 550 megawatt in the quad hydropower project would be in the Chenab would be also done. So this is something which is going to be the benefit for the people and the localites over there. Now coming to the editorial, that is true empowerment of the electricity consumers. This is the news. This is the editorial reported in the Hindu. It talks about the electrical rights and the electricity consumers, how they have been give the rights have been denied for a long duration of time. So this is again an analytical question relevant for your general studies paper 3. So as I rightly said that the editorial talks about did the electricity consumer truly get empowered. This is what is the main question of this article. They are questioning कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स होने चाहिए या फिर जो उनके राइट्स है क्या उनको एक्चुअली एम्पावर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 को परमलगेट किया गया था इन दिसंबर एंड आफ्टर द 2 years ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन स्टिल मेनी पीपल आर लैकिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री. Now, issue of supply of quality, because many states have not been able to provide the quality supply, especially in the rural and the small electricity consumers. Still they do not have the electricity connection, and if they actually have got it, they are not having the proper power delivery 24/7. Now, the enactment of consumer centric rule does not spark the public debate. ना ही उनको consumer rights के जो actual benefits होने चाहिए खास करके electricity right की वो उन पे मिल पाई है और ना ही इस पे debate हुई है. Now, the rules lay the emphasis on the national minimum standard of the performance of the parameters, जो कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंपनीज है, जो डिस्कॉम्स हैं, उनको फॉलो करनी चाहिए विदाउट एन अर्बन रूरल डिस्टिंक्शन. बिकॉज अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे स्टिल दे आर लैकिंग द नंबर ऑफ द आर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग गिवन टू देम इज लेस कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. सो स्पेशली फॉर द न्यू कनेक्शन मीटरिंग्स एंड बिलिंग. Now, digital metering is also one of the important issues that the rural people has raised.
नो लिमिटेशन ऑफ द रूल्स, जो रूल्स बनाए गए उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं. इट नीड टू बी रिकॉग्नाइज दैट प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सप्लाई इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द डिस्कॉम कंपनीज, बिकॉज दिस वुड बी कमिंग अंडर द ऑब्लिगेशन एंड द रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और सिमिलरली अगर बात करें कुछ बेटर प्रोविजंस फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको SCRCs भी कहते हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड कि ये स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन के अंदर आती है, ना कि क्वालिटी. बेसिकली जो क्वालिटी सप्लाई है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट उन्होंने इसको स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर रखा हुआ है. Now the lack of accountability system to enforce them is again one of the critical part. So accountability in terms of the DISCOMs and the state government has to be the pivotal. Now, consumer grievances and redressal forum. This is something which was again not been taken properly. तो अगर सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो बताई गई है एडिटोरियल में, दैट सजेस्टेड द कंपोजिट कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल फोरम. दिट शुड बी द फोरम दैट शुड बी लुकिंग इनटू द ईच एंड एवरी ग्रीवांसेस ऑफ द सिटीजन. बट रूल्स ये कहती है कि जो फोरम है दैट कॉन्स्टिट्यूटेड टू रेमेडी द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डिस्कॉम एज पर द एग्जिस्टेंस लॉ, but regulation should be headed by the senior officers and the company. But this is actually not happening. This has to be implemented because under the obligations of rules, the state government has to constitute a consumer grievances redressal forum, also known as CGRF. तो CGRF का काम होता है कि वो जो जितने भी डिस्कॉम्स और स्टेट से जो पावर सप्लाई कंपनीज उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट रेज की जाए तो उस ग्रीवांसेस को वो एड्रेस करे. What would be the way forward? Now, without strong accountability provisions, the consumer protections rules will not be guaranteed and better power supply would not be there, because supply and the quality and the timing, the power supply timing is very important. And the central government must ensure the accountability जैसे forums के through या फिर state companies जो है या फिर state government है या जो discoms हैं उनके प्रति accountability set करना would be the very important part. And DISCOM would be directed to ensure the automatic metering, चाहे वो रूरल एरिया हो अर्बन एरिया में ऑलरेडी मीटरिंग डिजिटल मीटरिंग की जा रही है, ऑटोमेटिक मीटरिंग है, वेयर एट 11 kb फीडर लेवल मेकिंग द डेटा अवेलेबल ऑनलाइन. सो अगर डिजिटलाइज हो जाएगी चीज़ें तो मीटरिंग में ओवरऑल जो कैलकुलेशंस हैं उसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी. Now the Central Electricity Authority of India would be directed to collect the supply quantity of data from the DISCOM, public host on them and online portal prepare for the reports, right? Now talking about the central government, they should disperse the fund to the financial assistance program based on the audit of the SOP reports. So audit and again accountability, making the grievances cell more strong and more robust would be something that is the need of the hour. Now coming to the Indian Express, this is an article, basically an explained article that talks about the Supreme Court has upheld the IBC section 21A, and IBC is very important for prelims. Section 32 is equally important, and again an analytical question on general studies paper 3 can be directly asked. So the Supreme Court has recently upheld the constitutional validity of sections 3, 4 and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2020. और ये जो इंसॉल्वेंसी होगी इट इज सेट टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द IBC टू अट्रैक्ट्स द बिडर्स, जितने भी बिडर्स हैं दैट वुड बी ऑफर द रीजनेबल एंड फेयर वैल्यू एंड द कॉर्पोरेट डिबोटर्स के लिए. सो वाइल अपहोल्डिंग द अमेंडमेंट, कोर्ट ने ये कहा है कि दे आर प्रोवाइडिंग द रिलीफ एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 बेंच थी उन्होंने आर्टिकल 142 का यूज़ किया इस जजमेंट को देने में, और ये जजमेंट आई है जहाँ पे उन्होंने सेक्शन 3, 4 and 10 ऑफ द IBC को अपहोल्ड किया है, राइट. सो उसकी वैलिडिटी को मेंटेन किया है. Now what is आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 142 आर्टिकल, ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, एज इट स्टेट्स दैट कि कोर्ट इन एक्सरसाइज विद द जुरिस्डिक्शन में पास अ डिग्री or make an order that is necessary to do complete justice in order of any pending cases. अगर कोई भी pending cases सुप्रीम कोर्ट के पास आई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसके वो एक्सरसाइज कर सकती है जुरिस्डिक्शन को, और जो पेंडिंग केस है उसको सॉल्व कर सकती है, राइट. उसमें अपनी डिग्री दे सकती है, अपने जजमेंट दे सकती है, एंड सच डिग्री शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर भी होगी उसमें भी एप्लीकेबल्स होगी, यूनियन पूरे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में सारे जगह पे अप्लाई करेगी, एंड इन द मैनर इट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. So this is the power of the article 142. Article 142 भी
डायरेक्टली इससे सवाल आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं. Now, judgment of the Supreme Court. What exactly the Supreme Court has says in his judgment? So the Supreme Court has held that the successful bidders for the corporate debtors under the Insolvency and Bankruptcy Code would be immune from any investigations. उनको किसी भी इन्वेस्टिगेशन से इम्यून रखा जाएगा. दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशंस बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सच एज ईडी, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज सच एज सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा कि वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 32A ऑफ द आईबीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट द बिडर्स, जो बिडर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, एंड दे वुड ऑफर अ रीजनेबल एंड फेयर वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डिबोटर्स. तो डिबोटर्स को खास करके ध्यान में रख करके जो बिडर्स की जो लाइन एंड लेंथ है उसको समझते हुए दे हैव गिवन द जजमेंट, एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वुड बी देयर. सो CIRP, राइट, CIRP is corporate insolvency resolution process would be something that would be done on the priority basis. Now, why is the Supreme Court upholding section 32 important? Supreme Court ने जो जजमेंट दिया है ये आगे किस तरह से हेल्प करेगा? तो अगर बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, सो दिस हैज कम इन 2016, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिजोल्यूशन प्लान है, दैट हैव सेवरल बिग टिकट केसेस दैट इज डिलेड, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंज की गई थी एजेंसीज को, रेगुलेटर्स को. अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं जो कि न्यूज़पेपर में भी डिस्कस्ड है, दैट इज भूषण पावर एंड स्टील. इसके खिलाफ एक डेट लेडन कंपनीज है जिन्होंने इंसॉल्वेंसी एडमिट की 2017 में, और इन्होंने कहा था कि इनकी कंपनीज ने 47,000 करोड़ रुपीस को बैंक को डेट रखा हुआ है. दे हैव टू पे दिस अमाउंट, and the financial institution and other they have like 780 crore rupees as an operational creditors. सो अगर ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इस तरह के जो जजमेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया वैलिडिटी 32A को. सो इन दिस केसेस द भूषण पावर आर एक्सपेक्टेड टू बी कंपेल्ड सून, राइट. इनको पे करना होगा खास करके बैंकों को या जितने भी NBFCs जिन्होंने पैसे लिए हुए. एंड एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन, ये कॉन्फिडेंस शो करेगी बिडर्स में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक जो सेंटिमेंट जुड़ी हुई थी नेगेटिव विद रिगार्ड टू दिस, दैट वुड बी ओवरकम, और कॉन्फिडेंस आएगी इन द बिडिंग एंड सच डिस्प्यूट ऑफ द कंपनीज एंड देयर एसेट्स. So section 32A of the IBC is again important. Article 142 of the Constitution. These two are some of the important section that is coming. So in today's discussion we have the two news with regards to Supreme Court. Make sure कि आप ये दोनों judgment को copy में note कर ले, because any time analytical question can be asked, right? Now coming to the answers for the yesterday question. The first question is from the first question, the correct option here is C, that statement 1 and 2 is correct. The source of reference here is from the Hindu Science and Tech column. Now the second question, the correct option here is B, that first statement is incorrect. The 42 Constitutional Amendment Act added 3 words, that is socialist, secular, integrity. And statement 2 is also correct, that the preamble to be of India Constitution based on the objective resolution drafted by Pandit Nehru. So you can read more of this on the Indian Polity book by M. Lakshmikant. Now coming to the MCQs question of the day. The first question is from the current affair or the economy section. Which of the following with reference to the public creditor register recently seen in the news? It aims to improve access of credit, strengthen the credit culture among the consumer. It will provide a single point in real-time resources for financial liabilities and personal entities. So what you have to do, you have to just consider which among the following is the correct option, or you can write your answer in A, B, C, D in the comment section down below. Coming to the second question, this is from culture. Which of the following statement is correct about the Mahabalipuram temple? The temple is dotted with several rock cut and freestanding structures, and this is one of the largest and oldest temple in the world. Right, so Mahabalipuram has already been one of the favorite topic for the UPSC. They have already asked some of the significant question from this topic. So this is again a question which can be relevant for the upcoming prelims examination. So do write your answer in the comment section and participate on the question answer series. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.